Hello everyone. So we are doing how to calculate the error. Okay, so in our last class we have calculated this one, your true value. हाँ, एक खाली formula पे मैंने बोला था error is true value minus measured value, but in your textbook they have mentioned as measured value minus true value. जो भी है उसको follow कर लेना, ठीक है? हाँ, in some book they have mentioned as measured minus true, but we will go for the in some book they have mentioned as true minus measured, but we will go for the textbook, so we will go for measured value minus true value. Okay, done. So now we will go for combination of, now we will go for combination now we will go for combination of error. So the first one is error of a sum or a difference. Error of a sum or a error of a sum or a difference. Okay, suppose you have got two physical quantity. So first quantity is, suppose you have calculated the measurement of A. So how we will write the value of A? You have measured some value A. Okay, so A we can express in this way, na? This is true value of A plus minus delta A bar. This is the standard format. I told you in the last class that A equal to A bar plus minus delta A bar. True value plus minus the mean absolute error. Suppose there is one more term, that is B, and B can also be written as B plus minus delta B bar. This is the way of writing a physical quantity, the measurement of a physical quantity. Now suppose we want to add A and B. So Z will be or equal to A plus B. Suppose this is one resistance R1. एक इमेजिन कर लो, ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये एक रेजिस्टेंस है R2. दोनों सीरीज में है तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना. तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, A प्लस बी होगा. तो इस पे भी एरर रहेगा ना. तो इट कैन बी रिटन एज Z बार प्लस माइनस डेल्टा Z बार. ओके, स्टेप बाय स्टेप. सो A इट कैन बी रिटन एज A प्लस माइनस डेल्टा A बार प्लस B can be written as B bar plus minus delta B bar. It can be written as A bar plus यहाँ से क्या आएगा B bar plus minus delta A plus delta B bar is equal to Z bar plus minus delta Z bar. तो देखो उस पे ट्रू वैल्यू. So we, from comparing left and right side, what we can write, that Z bar equal to A plus B, or error, what is the error? Error is equal to delta A plus delta B bar. Is it clear to you now? This is delta A bar plus delta B bar. So it means what you got finally, that when we will add two values of measurement, when we will add two measurements, then if it contains some error, then in their final calculation the two errors will be added, and similar phenomena will take place in case of subtraction also. So ये देखो, what is the first rule given, that hence the rule that when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result, ये एब्सोल्यूट एरर है ना फाइनल रिजल्ट का. फाइनल रिजल्ट क्या है, जेड में ये क्या है, ये तो ट्रू वैल्यू है. तो ये है एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट. सो द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी. ये क्वांटिटी ए जो है उसका इंडिविजुअल एरर है, ये क्वांटिटी बी का इंडिविजुअल एरर है. तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इन दोनों का एरर क्या होगा, ऐड होगा. तो इन केस ऑफ, ये हो गया इन केस ऑफ एडिशन. ये एडिशन के लिए कि इफ वी आर एडिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से भी ये फाइनल जो रीडिंग का एरर होगा, एरर टोटल एरर और टोटल एब्सोल्यूट एरर, ये दो जो रीडिंग्स था उन दोनों का एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे. लेकिन एक डिफरेंस होगा वहाँ पे कि अगर हम लोग
जेड बार जो ट्रू वैल्यू है वो हो जाएगा लेकिन ए बार माइनस बी बार, बट डेल्टा जेड बार दैट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फाइनल रीडिंग विल बी डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार. दिस विल हैपन इन केस ऑफ subtraction. Okay, so remember this is addition and this one is subtraction. So error of a sum or a difference, this is called combination of error. But what will happen if it is in terms of multiplication and division? देखो अच्छा एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 2.8. The temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 equal to 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius. तो from this देखो T1 is given as 20 degree plus minus 0.5 degree Celsius. Okay, this is T1 is given as 20 plus minus 0.5 and another is 50 plus minus 0.5. T2 is given as plus minus 0.5 degree Celsius. So T1 is given as 20 degree plus minus 0.5 and T2 is given as 50 plus minus 0.5. These are two temperature readings. Okay, so question क्या है, calculate the temperature difference and the error therein. So you have to calculate the temperature difference and the error therein. ठीक है, so temperature difference क्या होगा, that is delta T temperature difference ना. सो हम लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, फुल फॉर्मेट पे लिखते हैं. दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस टू हबो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, वीडियो में थोड़ा सा इंटरप्शन आया था ड्यू टू द डिस्कनेक्शन ऑफ करंट, लोड शेडिंग हुआ था थोड़ा समय के लिए. काइंडली इग्नोर दैट. ओके, सो दिस इज वी आर डूइंग माइनस ना. सो दिस टू क्वांटिटीज दे आर द ट्रू वैल्यू, सो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड. देखो ये वाला ट्रू वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट्स में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. तो इट विल बी 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हम लोग जब एरर पार्ट कैलकुलेट करेंगे तब दोनों एरर क्या होगा, यहाँ पे दोनों एरर वहाँ पे ऐड होगा. ठीक है, सो इट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द आंसर. ओके, इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये क्या है, फाइनल रिजल्ट का एरर. ये ट्रू वैल्यू डिवाइड करो, डिवाइड करके 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो वी आर गेटिंग 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. Next one, error of a product or a quotient. Error of a product or a quotient. Next one, error rules जो है, whatever the rules given, please write it from your textbook. It is given in bold letters. वहाँ पे bold letters पे वो दिया हुआ है. ठीक है, so next rule is error of a product. Error of a product or a quotient. You know quotient? Quotient means a to the power 2, a to the power 3, like this. Then what will happen? So let us follow the same method, that a can be written as a bar plus minus delta a bar. Okay, and the reading of b can be written as b bar plus minus delta b bar. So we want to calculate z is equal to a into b. Okay, तो if z is equal to a into b, ध्यान से देखना इसको, z को हम लोग लिख सकते हैं in this way, z plus minus delta z bar. a is given as a bar plus minus delta a bar into b bar
প্লাস মাইনাস ডেল্টা বি বার উই আর গোয়িং ইন ডিটেলস কি ফর্মুলা जो है সেইটো আমি কেনেকৈ পাম হাউ উই উইল গেট দ্য ফর্মুলা দ্যাট ইজ উই আর ডুইং হিয়ার সো ডু দ্য মাল্টিপ্লিকেশন সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইল বি এ বার ইন্টু বি বার নেক্সট ওয়ান ইট উইল বি প্লাস মাইনাস a bar delta b bar next one will be plus minus b bar into delta a bar ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ and the final one will be plus minus delta a bar into delta b bar देखो error is normally very very small 0.01 0.2 ऐसा होता है तो अगर 0.01 और 0.1 एक कैलकुलेशन में मान लो एरर आया मेरा 0.1 और दूसरा कैलकुलेशन में मान लो मेरा एरर आया 0.2 तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 0.02 सो यू नो कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स हुज वैल्यू इज लेस देन 1 और वेरी स्मॉल देन यू विल गेट अनदर स्मॉलर नंबर और एक एग्जांपल 0.1 into 0.1 व्हाट इज द आंसर 0.01 सो दिस value can be neglected why because here we are multiplying two smaller values okay so I will write here delta a bar into delta b bar can be neglected okay since it is very small so z bar is what this is nothing but a true value of the final result plus minus delta z bar is equal to acha a bar and b bar this is the true value of the first reading this is the true value of the second reading if you multiply then we will get the true value of the final reading so it can be written as z bar okay so plus minus दिस वन वो तो नेगलेक्ट हो गया सिंस वो वैल्यू बहुत ही स्मॉल है सो वो वाला वैल्यू नेगलेक्ट हो गया सो ये जेड बार और ये जेड बार ख़त्म सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप हाँ डू नॉट मिस द स्टेप प्लस माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया ठीक है देखो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है so divide both side by z bar दोनों साइड में z बार से डिवाइड कर दो तो ये होगा ये हो गया सो इट विल बी व्हाट इज z बार यू नो z बार इज नथिंग बट a बार b बार दिस आर ट्रू वैल्यू ना प्लस कैंसिल ओ सॉरी ये इधर कैंसिल नहीं जाएगा ये डेल्टा ए है ना इट इज़ ए बार सो बी बार कैंसिल और यहाँ पे था ए बार इंटू बी बार सो दिस इज कैंसिल सो इट विल बी इसको आगे लेके आओ सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन ए प्लस दिस इज रिलेटिव एरर इन बी एंड दिस इज द रिलेटिव एरर इन आवर फाइनल रिजल्ट दिस इज द आंसर ओके सो व्हाट वी विल राइट देखो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है देखो फाइनली द रूल इज व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स ठीक है तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट दिस इज डेल्टा z बार बाई z बार क्योंकि फाइनल रीडिंग क्या था z इज इक्वल टू व्हाट z कैन बी रिटन एज इन दिस वे ना z इज इक्वल टू z बार plus minus delta z bar this is the way to express so what is the relative error in the final result delta z bar by z bar is nothing but
रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल रिजल्ट, उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट विल हैपन इन टर्म्स ऑफ कोसेंट? कोसेंट मतलब क्या है? ए 2 होगा, ए स्क्वायर होगा। तो कोसेंट पे क्या होगा, देखो सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू, दिस इज इन टर्म्स ऑफ नाउ कोसेंट। हाँ, कोसेंट मीन्स व्हाट? द सेम वैल्यू विल रिपीट। z इज इक्वल टू सपोज a टू दी पावर rn, a इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में तो कोई एरर नहीं, a इज ए suppose say constant, so it can be written as, what is the final what is the error, the relative error? It will be delta z bar divided by z bar, constant का कोई error नहीं, but this error will repeat for n times ना। you imagine यहाँ पे अगर 2a होता, ये भी a है, ये भी a है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? a स्क्वायर, मतलब पावर कितना होगा वहाँ पे? 2। तो इस पे तो आंसर कितना होगा? डेल z बार इक्वल टू डेल a बार बाई a बार डेल a बार बाई a बार 2 होगा ना। तो पावर विल कम टू द फ्रंट, पावर टू जिटू আছে এটা ফ্রন্টত লৈ আহিবা সিম্পলি डेल्टा r बार डिवाइडेड बाय r बार। दिस इज इन टर्म्स ऑफ कोसेंट, ओके। सो इसको याद रखना। सो दिस इज एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए कोसेंट। Product means the relative error in the final result will be the relative error in is the sum of the relative error in their individual readings, and in terms of product the power will come to the front and the relative error in the readings. Done? अच्छा, so the next one is, हाँ अभी तो हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो ये सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो, दिस सेम थिंग। हाँ देखो यहाँ पे पावर पे देखो, हैंस द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी, ये तो डिवीजन के लिए ऑलरेडी बोला है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, वो सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी raised to the power of k is the k times the relative error in the individual quantity। तो इस पे मैंने कितना दिया? n टाइम्स दिया ना। सो n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, ओके। सो वी विल डू वन थिंग, बेस्ड ऑन दिस रूल्स वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो तुम लोग एक काम करना, ये जो रूल्स वहाँ पे दिया हुआ है इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ इन बोल्ड लेटर्स, तो ये रूल्स एक बार तुम लोग लिख लेना, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल एक दे दिया, चलो एक एग्जाम्पल आज ही यहाँ पे कर लेते हैं। फ्रेश फ्रेश है सब लोग, ठीक है। फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एग्जाम्पल से ही हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक मान लो कि हम लोगों ने एक स्फेयर का रेडियस, सपोज question is given as, suppose radius of a sphere is given by, radius of a, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 meter. The radius of a sphere is given by, today we are facing some problem in our power supply, so there are some blinking in the lights, okay, so kindly ignore it, okay। थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। I am also doing the classes without having fans is not working properly। तो radius of a sphere is given by r equal to this much, 4 plus minus 0.2 ohm। Question is, calculate error in volume। देखो, from this data solution, from this data what you can say that r is given by r bar, r को हम लोग कैसे लिखेंगे? r bar प्लस डेल्टा r bar ना, प्लस माइनस। तो r bar मतलब जो ट्रू वैल्यू है, दिस इज गिवन एज 4 मीटर, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, दिस इज गिवन एज 0.2 मीटर, ओके। So what is the volume of a sphere? You know that the volume of a sphere is given by 4/3 pi r cube. So we have to calculate the error in volume, okay,
So volume will be del V bar divided by V bar is equal to, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सो पावर कितना है 3, सो इट विल कम टू द फ्रंट डेल्टा आर बार डिवाइडेड बाय आर बार. ओके, ठीक है, ये तो हमें मालूम चल गया. अब देखो ये रिलेटिव एरर कितना होगा. सो कैलकुलेट सपोज एरर इन द वॉल्यूम. सो इट विल बी 3 into what is delta R. So it will be delta R bar is 0.2. सपोज क्वेश्चन पे है कि कैलकुलेट रिलेटिव एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. सो इट विल बी 0.6 by 4. So the relative error will be 0.120, 0.15. So the relative error will be 0.15. Okay, so you can calculate now percentage error also. It will be 15%. Is it okay? 4 1s are 15. हाँ, ठीक है. 3 into 0.2. हाँ, so the relative error is 0.15. So based on this we will solve a lot of numerical from error from the textbook also and from some reference book also. ठीक है. So with this we will be able to finish our class here for today. Okay.